Here we are to talk about the 10 commandments of language teaching. What are these 10 commandments? Okay, these are basics when we start learning. These 10 commandments to me that is very necessary for every student to understand and for every teacher to keep in mind when we are teaching English as a language. Okay, this has been a kind of a, I must call it a catastrophe in our academic system that we have been teaching English not as a language but rather as a subject. Okay, and therefore our students, when they come even at the graduate level or university level, they cope with so many problems with their communication skills, with their writing skills, and what is the problem and where is the problem, how can we cope that problem, so that we could have students with the language skills. And so for that, to promote and cultivate and produce these beautiful skills in our students, it is necessary that we must teach it as a language rather than a subject. Okay, so my dear students, let's begin with that. First slide here is in front of you. That's the 10 commandments of language. Okay, now here are these there's a teacher version and there's a student learners versions. Okay, what we should do being a teacher and what should you do being a student, that is very much important. Okay, and we have to understand that when you start learning, जब आप language सीखना शुरू करते हैं, so what kind of challenges, what kind of problem you face, आपको क्या problems आते हैं. Being a teacher, how can you support your students? एक teacher होने के नाते आप अपने students को कैसे support कर सकते हो? Being a student, how can you improve your skills? That's all about reciprocal. Okay, so that is language. Basically, learning any language is not a kind of a and the method and the ways and the techniques and the material used by a teacher, that matters a lot. Okay, to me that is the most important thing in learning process. Okay, so look at that. Coming to the first point is that we will talk about that what is on the part of the teachers and what on the part of the students. Okay, so we can compare these commandments of teachers and learner. Okay, now see, you go with your hunches. Okay, now being a student, okay, what you have to do when you start learning. Okay, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो then initially you have a problem. Okay, what are these hunches? Okay, you know that when a child starts walking, जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, he keeps stumbling. Okay, and then after that stumbling, it comes to the level when he starts walking properly. Okay, तो अगर कोई कहे कि मैं लड़खड़ाने के बगैर प्रॉपर चलना शुरू कर दूं, तो दैट्स सॉरी. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो मैं कहता हूं कि बेटा आप अंग्रेज़ी बोलें, तो वो कहते हैं सर मैं सीख लूं फिर बोलूँगा. तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि जब आप बोलेंगे तब सीखेंगे. So the first thing, that is where you don't worry about these your shortcomings, your problems, what you have. Okay, go with that your things. Okay, and on the part of the teachers, that lower inhibitions. Okay, teachers का role क्या होता है? Teachers must be facilitators. Okay, हम बेहैसियत टीचर जब हम अपने स्टूडेंट्स पे प्रेशर डालते हैं, तो दैट एक्चुअली इज़ द प्रॉब्लम. बहुत से टीचर्स भी अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मेरी खुशनसीबी होगी. और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कत्ल क्लासरूम में होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कातिल टीचर है. और क्योंकि हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को हमेशा सही जवाब देना है. माय डियर टीचर, स्टूडेंट्स सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस गलतियों से फुल होता है. अगर आप स्टूडेंट्स की गलती से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आई एम सॉरी, टीचर का फिर वहीं से रोल ख़त्म हो जाता है. वी हैव टू गिव स्पेस. ओके, मैं हमेशा जब अपने बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो मैं उनको यही सिखाता हूँ कि देखिए आपने अपनी लैंग्वेजेस कैसे सीखी. जब आप अपने घर में पैदा हुए थे, आपने लैंग्वेज सीखना शुरू की थी, तो क्या हुआ था? एक स्टेज पे तो आप लिसनिंग करते रहे, लेकिन उसके आगे चल के फिर आपने आस्ता आस्ता जब बोलने की शुरुआत की थी, तो वो दैट वाज मम बब मम लाइक दैट आपने शुरुआत की थी. और जब शुरू में आपने ये मम बब किया था,
तो आपके पेरेंट्स कितने खुश हुए थे, उन्होंने आपको कितना इनकरेज किया था। लेकिन अगर उस टाइम आपके वालिदैन कहते कि नहीं ये ममम बबब ना करो, आपको परफेक्ट पप्पा ममा बोलना है, तो मैं समझता हूँ आज तक आप कभी भी बेहतर लैंग्वेज ना बोल सकते। तो वो जो ममम बबब का फेज़ है, दैट्स everywhere in the language system, okay, and it is very much important to the phase. And I personally believe that in English language there comes the initial phase where you have to face this your hunches to get the big pictures, okay. Why to get the big picture? ये ना देखो कि अभी आप सीख रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, आपको मुश्किलात आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। आप ये सोचो आगे जब ये सब चीज़ें आप सीख चुके होंगे तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे, डाइव इन, ओके। दूसरा पॉइंट है बीइंग स्टूडेंट्स क्या है, डाइव इन, अंदर जाओ गहराई में, भले गलत सलत जो भी आता है इनिशियल स्टेज, ओके, यू स्टार्ट स्पीकिंग, ओके, are writing, okay, there will be problem, there will be issues, okay, don't worry about their initial issues. And being a teachers, आप कोशिश करो कि उस स्टूडेंट्स को देखो कि वो कहाँ जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, किस मेथड से वो अपने आप को फैसिलिटेट कर पा रहा है। सो वी हैव टू बीइंग ए टीचर वी हैव टू लोअर आवर इनहिबिशंस। हमने कम से कम उस बच्चे के रास्ते में मुश्किलात डालनी है और स्टूडेंट्स के रास्ते में ज़्यादा तौर पे जो है वो उसकी आसानी पैदा करनी है, और स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों से रेस से आगे बढ़ना है परवाह किए बगैर, और ड्राइव इन फियर नॉट, ओके। सबसे बड़ी रुकावट क्या है, आपका अपना खौफ, ओके। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कत्ल क्लासरूम में कैसे होते हैं। देखिए आप अपनी क्लास में बैठे हुए जितने भी साथी होते हैं, आप वो दोस्त होते हैं जो 10-10 साल एक जो है सीट्स पे एक ही क्लासरूम में एक ही स्कूल में गुजारते हो, आप ब्रेक्स इकट्ठी करते हो, आप खुशियाँ इकट्ठी मनाते हो, आप हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, लेकिन क्लास के अंदर आप सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में होते हो कि अगला बंदा गलती करे और हम उस पर हंसें, और ये जो हंसना होता है वो अगले बंदे को कत्ल करने के मुतरादिफ होता है। उसके बाद वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खामोश हो जाता है। तो करना क्या होता है बीइंग ए टीचर, ओके, यू हैव टू बीइंग ए स्टूडेंट्स, ओके, आप दूसरे को इनकरेज करें अपने क्लासरूम के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, आप उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। लोगों की ये ना इंतजार करें कि ये कब गलती करे और हम इसका मजाक उड़ाएं, दैट शुड नॉट बी आवर मेथड, ओके। हम इस चीज़ पे फोकस से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें। और मेरी समझ में जिस दिन हम क्लास में, याद रखो जो कौमें क्लास में बैठकर हंसती हैं वो कौम ज़िंदगी के मकाम और ज़िंदगी की फील्ड में हमेशा रोती रहती है। जिस दिन हम लोगों ने क्लास में बैठकर एक दूसरे पे हंसना छोड़ दिया, मैं दावा से कहता हूँ उस दिन आपकी कौम जो है ना ज़िंदगी के मैदान में फ़ख्र के साथ, और आपको कभी भी फिर ज़िंदगी में रोना नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल जस्ट फियर नॉट, लव दाई नेबर, ओके, दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग, ओके। जो भी आपका साथी, जो मैं कह रहा हूँ कि सीज द डे, कोशिश करो आप इस चीज़ को, जो भी आपके पास है, जो आपको मौका मिला है, जो आपके पास है, आप उसको हासिल करो, अपने आप को जो है ना प्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन अगेन आई डोंट प्रोमोट दैट सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन्स, जिस तरह स्कूल में ग्रेडिंग और मार्किंग का चक्कर लगा हुआ है कि जिसमें आप स्टूडेंट्स को मैकेनिक लर्निंग की तरफ ले जा रहे हो। नो, वी आर नॉट गोइंग टू compete against human being, okay, we are going to develop our skills, okay, so your focus should be on your personal skills, again cope with the chaos, okay। हाँ, यहाँ पे परेशानी होगी, ज़रूर आपको ट्रबल्स आएंगी, जो आपके पास जब आप सीख रहे होंगे तो एक अनसर्टेनिटी होगी लैंग्वेज सीखने में, दैट chaos, दैट अनसर्टेनिटी, वो जो परेशानी है, यू हैव टू कोप दैट थिंग, आपने उसको फेस करना है। एंड सेट योर ओन गोल्स, ओके, आप क्या करना चाहते हो, अपना गोल सेट करो, उससे आगे देन मिस्टेक हेल्प्स अस, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। तो ये जो ऊपर वाली हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ लर्नर्स, ओके। जो स्टूडेंट्स हैं उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनका जो है लोअर इनहिबिशंस इज दैट लोअर इनहिबिशंस से मुराद है कि लोअर इनहिबिशन से मुराद है कि आप जो है वो टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स की कम से कम जो है ना वो मिस्टेक्स को उसके लिए कम रुकावटें पैदा करो, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ओके। नंबर 2, इनकरेज रिस्क टेकिंग, ओके। बीइंग ए टीचर्स हमें क्या करना होता है, हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि दे शुड इनकरेज देयर रिस्क टेकिंग, ओके, ताकि स्टूडेंट्स सीखें।
how could we encourage risk taking in a classes? Okay, जब स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ लिख रहा है, जाहिर बात है उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे मिस्टेक्स करेगा. अब इसमें व्हाट इज़ द एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, अगर आप बीइंग ए टीचर अपने स्टूडेंट से सिर्फ यही एक्सपेक्ट करें कि हर टाइम आपका स्टूडेंट्स राइट आंसर्स के साथ आए, आई एम सॉरी, आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल जो है ना वो डिस्करेज कर देंगे. What should we expect from teachers, students? Okay, give them space. Okay, give them space to commit mistakes and to learn out of that thing. Okay, so encourage the risk of students. That is the second commandment. Okay, and ask students to dive in. Students जितने गहराई में जाएंगे उतने नए challenges उनके सामने आएंगे. And being a teacher, you would be helping them, and that is what is the role. And we will go on. Okay. Third, build self-confidence. Okay, that's very important on the part of a teacher as well as on the students. Okay, confidence, how comes is that? Okay, only the moment when you stop laughing at your friends in your class, that is the first point when you are going to inculcate and cultivate confidence into your students. Confidence is not something natural. ये कोई कुदरती बला नहीं है. कॉन्फिडेंस कोई ऐसी फितरती चीज़ नहीं है जो किसी के जन्म के वक्त उसके अंदर डाल दी गई हो. कॉन्फिडेंस इस समाज की पैदावार है. कॉन्फिडेंस आपके घर की पैदावार है. कॉन्फिडेंस आपके क्लास की पैदावार है. कॉन्फिडेंस आपके माहौल की पैदावार है. जिस तरीके से हम बैठकर अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जितना उनको सपोर्ट करेंगे इमोशनली, इंटेलिजेंटली एंड साइकोलॉजिकली, सोशली, तो वो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा. और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब व्हेन वी स्टार्ट और वी लोअर द इनहिबिशंस. आप बच्चों को सर स्क्रीन से वो तब आएगा जब आप बच्चों के अंदर अपनी इनहिबिशन को कम करेंगे और उनको जो है वो so that will be the third point. Okay, and move forward to this develop intrinsic motivations. Okay, क्या करना है स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना, we have to develop intrinsic motivations. intrinsic motivations क्या होती है कि स्टूडेंट्स के अंदर आप एक शौक पैदा करें कि वो उसकी लर्निंग की तरफ जो वो हो. मेरी तरफ से तो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन मे बी ऑन योर साइड नेटवर्क की वजह से अगर कोई हो तो वेल. सो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि एक बच्चे, कोई भी जब बच्चा है ना, आफ्टर ऑल ही इज नॉट पर्सन नहीं है कि वो मैं ये सीख रहा हूँ, मेरा फ़ायदा है, ठीक है, एट सर्टेन लेवल ही अंडरस्टैंड्स, किस लेवल पे उसको पता होता है. बट आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स. ओके, दे आर नॉट दैट मच सीरियस. क्या करना होता है? बहुत से टीचर्स मुझे कहते हैं कि यार मैं पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट्स डोंट लिसन टू मी केयरफुली. तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार स्टूडेंट्स तब सुनते हैं ना जब आप उनके अंदर आग लगाओ. मैं वैसे भी कहता हूँ कि टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है आग लगाना, और फिर स्टूडेंट्स उसी आग के अंदर पूरी उम्र जलता रहे और अपने लिए नित नए रास्ते तलाश करता रहे. और बुनियादी तौर पे जो टीचर का काम है ना, वो एक काम है कि अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से छीन ले, कि अब कभी भी अपने स्टूडेंट्स को काश कहने का मौका न मिले कि वो ये कह सके ज़िंदगी भर के काश मुझे भी कोई टीचर या लीडर मिलता तो आज मैं भी किसी मकाम पे होता. तो टीचर का जो रोल है अपनी, तो ये टीचर कैसे ये रोल प्ले करेगा? डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशंस बच्चों के अंदर एक वो कैफियत, वो जज्बा, वो शौक पैदा करें ताकि उसकी लर्निंग की में कोई शौक पैदा हो. जब तक शौक ना हो, जब तक उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स के ना, that doesn't matter. Okay, so I personally believe that being a teacher is okay. Your intrinsic motivation that, okay, ताकि वो they should seize the day and then engage in a cooperative learning. Okay, ये चीज़ देखें हम काफ़ी अरसे तक लैंग्वेज में तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ ए कोऑपरेटिव लर्निंग. ओके,
हम मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते रहे, और मैं उसको इलाबरेट करूँगा कि हम इस तरह की के मेथड की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ। लेकिन एक्चुअली कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या था, क्योंकि लैंग्वेज है ही एक ऐसा स्किल है जो आप किसी करेंगे तब आप उसको जो यूज़ करेंगे। अब जब उस इंटरेक्शन की बात हो रही है, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इंटरैक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, देयर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट environment where the students could interact, okay, and also support each other, okay. And this means that peer learning and interactive sessions, group discussions, and after that group discussions and interactive sessions, okay, what should be the process, okay. You simply divide your students into the groups of 2 or 4 or 6, give them a task for writing, then ask them to exchange their copies, their written material, to check one another's copies and material, and to apprise the mistakes and to support each other. एंड बट बिफोर ऑफ दैट, ये सब कुछ करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में तकसीम करें। और वहाँ में जब लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो यही मेरा जो है ना वो तरीक़ेकार होता है, 4 या 6 के ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में डिस्कशन भी करते हैं, तो भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, और जब लिख रहे होते हैं तो जब लिख कर अपनी कापी दूसरे को देते हैं तो एक दूसरे की कापी चेक करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे की मिस्टेक्स में को हेल्प करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उनके जहन में एक बार डाल देता हूँ कि आपने अगले साथी की रिस्पेक्ट करनी है, गलत मिस्टेक्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना। मिस्टेक्स हर किसी के लर्निंग प्रोसेस में होंगी। वी आर हेयर टू सपोर्ट वन अनदर, ओके। So that is the key, that is the rule to teach language or even other subjects, but in language, okay, we need too much about the cooperative system, okay. So this is the 5 rule, okay. Then love thy neighbor, okay, engage in a cooperative learning, and then use right brain process, okay. That's very much important. What is that, okay? Use right brain process, okay. काफ़ी अरसे तक हमने लैंग्वेज को जो है ना वो ट्रांसलेशन करके तर्जमा करते पढ़ाते रहे। ये एक मार्शल मेथड था ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का, अंग्रेज़ों ने भी यूज़ किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब उनकी आर्मी मुख्तलिफ ममालिक में जा रही होती थी तो फिर वो क्या करते थे कि स्पीकर लगा कर उसी मुल्क की ज़बान जो है ना वो पूरा दिन में उनको फ़ौजियों को बैठा कर स्पीकर पर सुनाते थे, और थोड़ा बहुत उनको जो है ना वो चीज़ें सिखाते थे कि उनकी लैंग्वेज से उनकी नो हाउ हो। That was the methods what they have been using, okay. अब हुआ क्या, what we have been also using that translation method, okay, for more than 4 or 5, 6 decades in our academic system, but it couldn't bring us that actual product, the result what we expected, okay. How could we use this right brain process is that we involve students so that they start using language by thinking in this language, okay, not simple translation method, okay, कि वो पहले अपनी ज़बान में सोचे फिर उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा करे। बचपन में हम सब यही करते आ रहे थे कि पहले जो सेंटेंस होता था उसको पहले अपनी ज़बान में सोचते थे फिर तर्जमा करते थे, बट वी डिडंट थिंक इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। द मोमेंट यू डोंट स्टार्ट थिंकिंग इन दिस लैंग्वेज, ओके, you won't be able to improve your skills or to use this language in the real process, okay, because where the language is being processed, okay, definitely all the languages they are being processed in the brain, okay. And if you are not using the brain for the targeted language but you are using it simple for the translation method, तो फिर क्या होगा कि आप सोच अंग्रेजी रहे होंगे, अपनी ज़बान में सोच रहे होंगे और तर्जमा करेंगे। तो as long as you have been using this translation method, I don't think that it will give you real command or you would be having a kind of positive or systematic or scientific change in your language, what students, being students, you need, okay. So we have to produce this particular skill that students must think in an English language, okay. अब आप सोचेंगे
कि सर अंग्रेज़ी में हम कैसे सोच सकते हैं, हमें तो अंग्रेज़ी नहीं आती। इट इज़ नॉट सो, ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टेक्निक, ओके। क्योंकि जो इसमें एक मेथड आता है लैंग्वेज टीचिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो टेक्निक है लिसन एंड आंसर, ओके। तो अगर हम लिसन एंड आंसर मेथड यूज़ करेंगे आगे चल के, ये मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ दिस लिसन एंड आंसर मेथड इन योर क्लासरूम, आल्सो इन योर ग्रुप लर्निंग एंड योर कोऑपरेटिव लर्निंग। थ्रू दैट लिसन एंड आंसर मेथड, ओके, आप डायरेक्टली सोच रहे होते हैं उसी प्रोसेस के दौरान, उसमें मज़ीद जो है ना आपको जो है ना ट्रांसलेशन करने का मौका नहीं मिलता, जिससे क्या होता है आपका जहन ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली लैंग्वेज को ब्रेन के अंदर प्रोसेस करने के काबिल हो जाता है। तो वी हैव टू आल्सो यूज़ दैट स्किल टू प्रमोट दिस right brain process, okay. And then go to the sixth, okay, promote ambiguity tolerance, okay, जो मैं पहले कह चुका हूँ। गलतियाँ होंगी, that's all part of learning, okay. Even you are here to learn with me in this session, okay. Mistakes are the part of learning. I, being a teacher, can commit mistakes, okay. We are not exempted to that, okay. Nobody can exempt to that, okay. But the thing is that what we need to do, okay, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अपने टीचर्स से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, समटाइम स्टूडेंट से सीखते हैं, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त बातें मिल जाती हैं, तो दैट्स नॉट इशू, ओके। मिस्टेक इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। एंड मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने क्लासरूम में ये कहता आया हूँ कि आई लव मिस्टेक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई लव मिस्टेक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। और उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स की बुनियाद पे आज तक कभी किसी बच्चे को मैंने मिस्टेक पे डिस्करेज नहीं किया। आई डिडंट हर्ट देम, आई डिडंट टीज देम। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो गलतियाँ कर रहे होते हैं ना, तो मैं उनकी गलतियाँ उनको बग़ैर किसी एक्सप्रेशन दिए उनको समझा रहा होता हूँ। फिर एक स्टेज आ जाती है जब उसको पता होता है कि मैं अगर गलती करूँगा तो सर मेरी हेल्प करेंगे बस। और जब उसको ये पता होता है कि जब मैं गलती करूँगा मेरी हेल्प होगी, तो उसके जहन में वो जो खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं बीइंग ए टीचर मैंने यही सीखा है कि मैं बच्चों का खौफ ख़त्म करता हूँ। और बिलीव मी, जब उन बच्चों का मैं खौफ ख़त्म कर लेता हूँ कसम से, उसके बाद उनके अंदर जो लर्निंग की स्पीड होती है, जिस तरीके से वो पढ़ रहे होते हैं, यू कांट बिलीव, यू कांट इमेजिन कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वो सीख रहे होते हैं। सो प्लीज़ बीइंग ए टीचर्स, ओके, प्रोमोट एम्बिग्यूटी टॉलरेंस, ओके। हमारा काम ये नहीं है कि हम मिस्टेक्स पे, परेशानी पे हमें जो है ना वो, अगर यू थिंक योर लर्नर इज़ हैविंग ए प्रॉब्लम, आपके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर थिंग्स, दे आर एम्बिगियस, चीज़ें जो मुश्किल हैं, एंड ही इज़ अनएबल टू रिजॉल्व द इश्यूज़, वो उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। बीइंग ए टीचर आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ ए टॉलरेंस। हम वहाँ पे टॉलरेंस का मुजाहरा करें और उनको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, हेल्प करें कि इट्स ओके, मिस्टेक्स आर देयर, डोंट वरी एंड कीप डूइंग लाइक दैट थिंग, ओके। सो दिस वाज द 7th commandment, and then come to another 8, okay, practice intuitions, okay। जो मैंने आपको पहले बात की कि स्टूडेंट्स को हमने ये सिखाना है कि हाउ टू डील विद दिस लैंग्वेज intuitively, not simple using translation method etc, but this is the way we can use this process, and we can use this language system by promoting this particular technique in our classroom, where students, they are allowed to use this language by thinking in this language, and they start processing language in their brain rather than simply using translation method, okay। Then move forward, okay, come to point number 9, process error feedback, okay, whatever the process error, okay, they come there, okay, being a teachers we are here to give them feedback to help them out, and so that they could face their issues and a problem, and they should come out of this crisis, okay। So the last but not the least is that, okay, set personal goals, okay। Being a student, okay, you need to set your personal goals, what you want to do in your life, and being a teachers, okay, we also set our goals, what we want to, what type of students we want to produce, okay। So ultimately we would be able to use to make a product, okay, where we could
make a very wonderful thing. Okay, so what is the real thing? Okay, being again, this is a simple review of this entire thing. Okay, lower inhibitions and fear not. Students, you are not to worry about, and teachers, okay, आप कम से कम students के रुकावटें पैदा करें during learning process. Okay, so that is what the students variance and the teachers variance. Okay, teachers का काम है कि मुश्किलातें कम करना, students का काम है कि खौफ ख़त्म करना. टीचर का काम है कि encourage करें risk taking के, students risk करें, और students का काम है dive in, वो और गहराई में जाए और जो है चीज़ को मजीद जो है करे. बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, डेवलप इंटरजिक मोटिवेशन. स्टूडेंट्स के अंदर आप उनके अंदर वो शौक़ पैदा करें ताकि वो सीखें. और स्टूडेंट और जो ना 5 नंबर, इंगेज इन कोऑपरेटिव लर्निंग. और आप इस तरह का लर्निंग सिस्टम क्लास में डालें जिसमें बच्चे और आप सब मिलकर एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीखें. यूज़ राइट ब्रेन प्रोसेस. ओके, प्रॉपर तरीके से बच्चों के ब्रेन जो है उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, उनकी जो है ना वो इंट्यूटिवली लैंग्वेज सिखाना. और प्रोमोट एम्बिग्यूटी टॉलरेंस. बीइंग ए टीचर, आप अपनी क्लासरूम में गलतियों को टॉलरेट करने की एक माहौल पैदा करें. कभी भी क्लास में गलती हो जाए तो स्टूडेंट्स एक दूसरे पे हंसे ना. और मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी क्लास में पढ़ा रहता हूँ, अगर मेरे किसी बच्चे पे किसी क्लास के या किसी स्टूडेंट्स ने हंस दिया या उसी का मजाक उड़ा दिया तो मैं बायकाट करता हूँ क्लास का. मैं उनको कहता हूँ कि 30 सेकंड के लिए मैं आपसे बायकाट कर रहा हूँ और 30 सेकंड के लिए मैं अपनी क्लास बंद करता हूँ एहतजाज के तौर पे. अच्छा, 30 सेकंड मैं 30 सेकंड में पढ़ाना बंद कर देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि 30 सेकंड के लिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे एहतजाज कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे एक स्टूडेंट्स की ईगो को, रिस्पेक्ट को हर्ट किया है. अच्छा, इस तरह अगर मुख्तलिफ टाइम पे मैं अगर ये 30 सेकंड का एहतजाज करता हूँ तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो मेरे स्टूडेंट से वो आदत ख़त्म हो जाती है और वो एक दूसरे को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं. सो this is all about that. Okay, and number 8, okay, practice intuitions. Okay, process error, feedback and set personal goals. बीइंग ए स्टूडेंट्स, आपने खौफ नहीं करना है. डाइव इन, गहराई में जाओ. बिलीव इन योर सेल्फ. सीज द डे, जो भी आता है उस डे को अपना बनाओ, उससे सीखो. लव द नेबर्स. यहाँ नेबर से मुराद आपकी क्लास फेलोज हैं, उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो. डोंट टीच दैम, don't taunt them, even don't especially, you know, that's very common in our classroom, that bullying is very common. Okay, we need to stop that bullshit. Okay, classroom should be the places where we must be there always, whatever the circumstances there must, but we should not leave the class. क्लासरूम कैसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती धक्के देकर बाहर निकालो, फिर आप दोबारा आकर अंदर बैठ जाए कि नहीं सर 10 मिनट और. दिस शुड बी द क्लासरूम एंड वी कैन प्रोमोट दैट इन्वायरमेंट इन आवर क्लासरूम. बट हेयर बदनस्ती भी है कि कोरोना की वजह से अभी हमें वो इन्वायरमेंट नहीं है. बट इवन थ्रू दिस वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस, ओके, we can develop that type of a things. Okay, we can move forward. Okay, so then cope with the chaos. Okay, आपको सीखने में जो chaos क्या होता है, जो परेशानी होगी, डिस्टर्बेंस होगी, जो बातें समझ में नहीं आएगी, जब शुरू में आप सीखेंगे there will be problem. So cope with that. Okay, and go with your hunches. Okay, जो आपको रुकावटें आ रही हैं, जो hunches क्या होती हैं, जब आप चलते हैं तो झटके लगते हैं, जो आपको रुकावटें आती हैं, जो आपके जो ना वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं सीखने के दौरान, उनके साथ साथ चलते रहें. एंड मिस्टेक्स हेल्प अस. याद रखो, गलतियाँ हमारी मदद करती हैं. सेट योर ओन गोल्स. ओके, आप स्टूडेंट हैं तो आपके अपने गोल सेट करने के व्हाट यू वांट टू लर्न. ओके, सो दीज वर द 10 कमेंटमेंट्स. ओके, दे आर वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड वी डोंट नो व्हाट द एंड इज, सो वी शुड एंजॉय द प्रोसेस. एक ज़बरदस्त बात कि हम में से किसी को भी पता नहीं है पास्कल टीचिंग है में कि हमें ये पता नहीं कि एंड क्या होगा. इसके लिए हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए. तो मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग सिर्फ जो है ना वो अपने टारगेट को एंजॉय करते हैं और अपने प्रोसेस को बड़ा बोरिंग और भयानक बना देते हैं. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो प्रोसेस को मद्देनज़र रखना चाहिए. जो आपका प्रोसेस है आप उसको एंजॉय करें. जी, ये किसी ने कमेंट्स किया है कि स्टूडेंट्स क्लास में हंसते हैं और वो टीचर हमें बात नहीं करने देते. यस, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को मैं हैंडल कर दिया कि व्हाट शुड बी द क्लासरूम एनवायरनमेंट. ओके, आपको बीइंग ए टीचर हमें वो कोऑपरेटिव लर्निंग क्लास माहौल देना चाहिए, सो दैट वी कुड हैव दैट टाइप ऑफ अ क्लास.
ऐसी क्लास होनी चाहिए where we could have independence and self-respect and honor for every learner, respect every learner. Okay, being a teacher, अगर आप टीचर हैं तो आपका काम ये नहीं है कि यू ट्राई टू बिकम अथॉरिटेरियन, आप कोई डिक्टेटर बनकर बैठ जाएं, बट योर रोल शुड बी फैसिलिटेटर, केयर टेकर. आप उनको केयर करें, फैसिलिटेट करें, सो दैट वी कुड support students and we could help them out. Okay, so well, तो मैं ये कह रहा था कि don't worry about what is the end, just enjoy the process. Okay, जो process होता है उसको ज़िंदगी में enjoy करना सीखें. And I took this from the references of this